Hi, hello, namaskar. Welcome to OPSC Achievers Academy. So, in today's lecture, we will start the discussion of previous year questions from 2024 to 2022. 3 ବର୍ଷର ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷର GS question discussion କରିବା. We will start with 2024. Then after that, we will move to 2023, and lastly, we will move 2022. So, this is few lines about the mentor. Myself, Pavitra Kumar Nayak. These are some of my credentials. I have graduated from NIT Agartala. Then I have worked as assistant professor for 5 years at GTU Gujarat. Already appeared 5 times mains and multiple interview in OPSC, OCS. So let's start the lecture. In this lecture, we will discuss 3 questions specifically from GS 1, which includes Odisha section. देखो, question number 3 is explain how Bhaumakara and Somavanshi dynasty contributed to the political consolidation and cultural transformation of early medieval Odisha. Eta gote question. Secondly, we will talk about social empowerment. Explain how the policy of social empowerment have been implemented in India with example from Odisha state. And the last question, discuss the Bhakti movement transformed religious practice and social relation in medieval Odisha. Question number 3 or question number 5. Okay, question number 3 and question number 5 is already given in our OPSC module. OPSC Odisha module, जोटा आम प्रिलिम्स टाइम रे स्टार्ट करथिलु. सम स्टूडेंट्स सम अराउंड 25-30 स्टूडेंट्स आमटू नेजन सेटा. सेथिरे डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, सोमवंशी हो, भौमाकर डायनेस्टी हो, डायरेक्ट क्वेश्चन तादर अछि. This is a direct question from that material. Similarly, Bhakti movement and transform religious practice, it भी direct question from that material. I am not saying कि आमे material रू ही क्वेश्चन पढ़ी, rather आमे जेहेतु syllabus को देखे कि material बनैचु and they have also asked from the syllabus, तो जदि तुम आम material पढ़िबो, it will definitely give you a boost. कहीं ना ओडिशार material is not that readily available. आपन को मिलिबो, बट स्कैटर्ड मटेरियल मिलिबो. कोठी गोटे दिटा टॉपिक थिबो, कोठी टॉपिक भल माने टॉपिक तो थिबो, बट सेते जति की डीप दरकार, जति की इन्फॉर्मेशन दरकार, सेति की इन्फॉर्मेशन नथिबो. फाइन. So we have made a material that will going to definitely help you in mains. Similarly, question number 4, जोटा social empowerment उपरे, now we have added the social or society part of GS1 in that material also. तो आमे ओडिशार स्पेसिफिक यदि आम मटेरियल कहवा, ओडिशार जोग्राफी आम दौचु, ओडिशा जोग्राफी, ओडिशा हेरिटेज एंड कल्चर, देन ओडिशार हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ओडिशा. तापरे आम ऐड करछु सोशल और सोसाइटी जोटा अछि ओडिशा सोसाइटी, सेटा आम ऐड करछु ओडिशा सोसाइटी, दैट इज आल्सो एडेड. And also we will add specific relevant topics जोटा GS2 रो अछि. And if any other topics जोटा demand करिवो ओडिशा specific, we will add into that Odisha module. It is readily available with us. If you want to purchase that, you can also contact us. And this question answer series is completely free. ये जो आम 3 वर्षर क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करूँ, इट इज कम्प्लीटली फ्री फॉर ऑल. यू कैन वॉच इट. एंड टू गेट नोटिफिकेशन एंड ऑल, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. जदि तुम भल लगुच, जदि तुम चाहूँ कि आमर नोटिफिकेशन तुमको मिलू एंड यू वॉच आवर वीडियोस, देन यू मे consider subscribing our channel, that is
OPSC Achievers Academy, OPSC Achievers Academy, right? So let's start. ଯେତେବେଳେ ଆମେ question answer କରିବା, I will give you some tips. That tip is very much important to secure a good score. केवल question answer लिखा पढ़ले सेमती हेनी, तुमको प्रैक्टिस करा पड़ो, तुमको बुझा पड़ो क्वेश्चन कौन डिमांड अच्छी एंड हाउ टू एड्रेस द डिमांड. फाइन, लेट्स स्टार्ट. हाउ भौमाकर एंड सोमवंशी डायनेस्टी कंट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल कंसोलिडेशन. बुझी तो दीटार डायनेस्टी पचार, गोटे भौमाकर डायनेस्टी पचार. दीज आर द कीवर्ड्स दैट यू अंडरलाइन फास्ट. भौमाकर डायनेस्टी आउ सोमवंशी डायनेस्टी, दीटा डायनेस्टी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फर्स्ट थिंग इज पॉलिटिकल कंसोलिडेशन एंड सेकेंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. बुझिपार. भौमाकर आउ सोमवंशी डायनेस्टी दीटा जिनस तुमको मेंशन करिया पड़ो. फर्स्ट थिंग इज हाउ दे politically consolidate the state Odisha, and secondly you need to answer the cultural transformation that happens during their tenure. दी जनकर भौमाकर आउ सोमवंशी दी जनक डायनेस्टी रे कौन कौन कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता, दैट ऑल्सो वी नीड टू मेंशन. एंड कीप इन माइंड द वर्ड लिमिट मस्ट बी अराउंड 250 वर्ड्स. टिके एपट सेपट गले चलो, 230 हेल्ले चलो, 270 हेल्ले चलो, बट से वर्ड भितर लिखा चेष्टा करियो. 270 हेल्ले प्रोब्लेम कौन हम, बाकी क्वेश्चन को आंसर करने यू मे नॉट गेट दैट टाइम. फाइन. द एंड आम ये जेहेतु तुमको देखु, सो वी हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड व्हाट इज द इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द बॉडी पार्ट एंड व्हाट विल बी द कंक्लूजन. राइट. द अर्ली मेडिवल पीरियड वाज ए वाटरशेड एरा इन ओडिशा हिस्ट्री. द भौमाकर केबेरु केबे थे, 736 रु 950. द भौमाकर 736 to 950 CE laid the foundational administrative framework which the Somavanshi 931 to 1110 CE later consolidated, effectively transforming a collection of fragmented principalities, that is mandala states like Utkala, Kalinga, Kongoda, Kosala, into a political unified and culturally distinct region known as Trikalinga. दीटा डायनेस्टी टाइमलाइन आम लिखले, भौमाकर डायनेस्टी टाइमलाइन लिखले आम 736 रु 950. तापर आम सोमवंश भी टाइमलाइन लिखले 931 रु 1110. से माने कौन करथिले, दे ट्रांसफॉर्म ए कलेक्शन ऑफ फ्रैगमेंटेड मंडल जोटा अलग अलग पार्ट है कि थिला, like some parts were known as Utkala, some were known as Kalinga, some were known as Kongoda, then some parts are known as Kosala. ए सब को से माने यूनिफाई करके गोटे रीजन बनैथिले, गोटे डिस्टिंक्ट रीजन, दैट इज नोन एज Trikalinga. Now moves to the political consolidation. First है भौमाकर integration. They integrated the coastal tract Tosali and brought various autonomous tribal chiefs, that is Mandalapatis, Mandaladhipatis, under a centralized tributary system, ending centuries of political fragmentation. से माने भौमाकर माने कोस्टल ट्रैक्ट जो तोसाली थिला आउ जो छोट छोट मंडलाधिपति थिला, ट्राइबल चीफ माने को थिले, तांको इंटीग्रेट करिकी तांकर किंगडम ने मिसेले. Considering the Somavanshi unification, they achieved the political amalgamation of Kosala, that is Western Odisha जोटा आमे Kosala बोली कहउचंदी, and Utkala, that is coastal Odisha. Kosala आ Utkala दीटा को से माने मिसेई थिले. This historic synthesis permanently defined the geopolitical boundary of medieval Odisha. तो geopolitical boundary of medieval Odisha ए दीटा को नहीं की कोसल आ उत्कल को ऐड करके हितला. Talking about the administrative bureaucracy, both dynasty placed loose tribal oligarchies with a structured hierarchy of officials
कौन ना थिला महासंधि विग्रहक एंड पुरपाल एनश्योरिंग रेवेन्यू स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट जो छोट छोट मंडल थिला ताकू सबू हटेकी से माने गोटे स्ट्रक्चर्ड ऑफिशियल एस्टाब्लिश कले दैट इज नोन एज महासंधि विग्राहक एंड पुरपाल ताद्वारा कौन है तांको रेवेन्यू स्टेबिलिटी बढ़ला एंड लॉ एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली से माने मैनेज कर पारले एंड टॉकिंग अबाउट भौमाकर तांकर गोटे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इज अबाउट फीमेल एम्पावरमेंट दे यूनिकली विटनेस्ड एटलिस्ट 6 फीमेल रूलर्स भौमाकर से टाइम रे मेडिवल ओडिशा रे 6 जन अति कम रे फीमेल रूलर थिले एग्जांपल के त्रिभुवन महादेवी वन demonstrating a highly evolved and stable political succession matrix that prevents civil wars जेतबले बाकी इंडिया रे इंडिया बोले तो से कॉन्सेप्ट नथिला अलग अलग जो छोट छोट स्टेट्स थिले सेठी भी जेतबले मेनली मेल डोमिनेंट किंग्स वेयर प्लेस्ड से जगह रे फीमेल एम्पावरमेंट करिकी भौमाकर डायनेस्टी फीमेल रूलर को भी एस्टाब्लिश करथिले टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट करथिला कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मींस कल्चरली से माने कोन कंट्रीब्यूट करथिले फर्स्ट इज आर्यनाइजेशन एंड ट्राइबल एब्जॉर्प्शन दे एक्सेलरेटेड द असिमिलेशन ऑफ इंडिजिनस ट्राइबल डेटी इनटू ब्राह्मणिकल फोल्ड द इवोल्यूशन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ फ्रॉम ए ट्राइबल ओके शबर डेटी आम कहते शबर देवता टू ए स्टेट डेटी एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग दिस एरा मेनली तुम जब पढ़ी लॉर्ड जगन्नाथ जिते आम अर्ली एस्टाब्लिशमेंट होते लॉर्ड जगन्नाथ से शबर पूजा करते फ्रॉम दैट शबर डेटी टू द स्टेट डेटी माने ओडिशार वर्तमान जदि आम कल्चर कहवा आम जगन्नाथ कल्चर बोली कहते कि ओडिशार जदि बाहर किसी माने रिलीजियस एक्टिविटी में जना दैट इज ओनली बिकज ऑफ जगन्नाथ कल्ट जगन्नाथ आमको बाहर लोक जानते तो से जो जगन्नाथ शबर डेटी भाव में माने शबर भगवान भाव पूजा होते से आमर स्टार्ट होगी आम स्टेट्र डेटी हिसाब से पूजा करा आरंभ करागला रिलीजियस हार्मोनी द भौमाकर इनिशियली से बुद्धिस्ट थे ओके बुद्धिस्ट थे से माने जे तुम जानी ललितगिरी उदयगिरी एंड रत्नगिरी जोटा आम बुद्धिस्ट ट्रायंगल कहते दैट इज सिचुएटेड इन जाजपुर सेटा भी भौमाकर माने ही एस्टाब्लिश करते तो से माने बुद्धिस्ट थे इनिशियली दे आर द बुद्धिस्ट लेटर पैटर्नाइज्ड शैविज्म एंड वैष्णविज्म से माने शैविज्म और वैष्णविज्म को भी कंट्रीब्यूट करते दिस पीसफुल ट्रांजिशन इज एपिटोमाइज्ड बाय बैताल देउल टेम्पल बैताल देउल टेम्पल ऑल्सो एस्टाब्लिश्ड बाय द भौमाकर सो ये जना पड़ी कि दैट इज ट्रांजिशन से माने बुद्धिस्ट है सत्वे से माने शैविज्म आउ वैष्णविज्म को भी पैटर्नाइज करते द कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आम जानते सोमवंशी रूलर माने बहुत सारा मंदिर क्रिएट करते लाइक द मुक्तेश्वर टेम्पल इन भुवनेश्वर जोटा कहते हैं जेम ऑफ ओडिशान आर्किटेक्चर बिकज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर वर्क तारे जहाँ खुदाई कराई जो पिलर्स वगैरह अच्छी दैट इज नोन एज जेम ऑफ ओडिशान आर्किटेक्चर एंड मोनुमेंटल लिंगराज टेम्पल व्हिच परफेक्ट द मैच्योर कलिंग स्टाइल आगे मुक्तेश्वर टेम्पल होता तापर लिंगराज टेम्पल है एंड लिंगराज टेम्पल आम कहते कि कलिंग स्टाइल जो इवॉल्व करथिला दैट रीच इट्स पीक एंड जदि आम कथा लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी फाउंडेशन उपरे द इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स सब रिजन फोस्टेड ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी लेइंग प्रोटो ओडिया लिंग्विस्टिक फाउंडेशन से ऑब्वियसली आम ओडिशा बोली किसी नथिला किंबा ओडिया स्पीकिंग ट्रैक्ट जो आम कहते ओडिया स्पीकिंग पीपुल सेमती किसी इंटीग्रेशन नथिला बट प्रोटो ओडिया लिंग्विस्टिक फाउंडेशन हिसाब से माने जेते सब अलग अलग पार्ट रे ओडिया कथा होते जमी आम देखिले कि कंगोद होगला कौशल होगला कलिंग होगला उत्कल होगला ताकू से माने गोटे ट्रैक माने गोटे कौन करते गोटे रिजन में कन्वर्ट करते ये सब आमको देखा मिले थ्रू रॉयल कॉपर प्लेट इनस्क्रिप्शन एंड संस्कृत
कोर्ट लिटरेचर ठीक अच्छे कंक्लूजन आम कौन लिखा फ्रॉम द एनालिटिकल व्यू पॉइंट भौमकर एंड सोमवंशी डायनेस्टी डिड नॉट merely rule they engineered the geopolitical and cultural blueprint of modern Odisha आम modern Odisha रे जहाँ भी देखुचंती whether it is geopolitical or cultural blueprint that has been done during their time while the Bhaumakara initiated a structured administration and religious synthesis the Somavanshi consolidated this achievement into a unified empire. Together, they paved the way for imperial golden age of later Eastern Ganga. तापर जो गंगा रूलर आसले तांको पे माने गोटे गोल्डन वे गोटे तांको पे तैयारी करते गले राइट सो जेमिति आमे एटी कथा ले दीटा क्वेश्चन थिला और दीटा पार्ट थिला ताकू दीटा पार्ट को आमे इक्वली वेटेज देखि लिखिले फाइन सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आमे दिबा इट इज अबाउट सोशल एम्पावरमेंट explain how the policies of Odisha of social empowerment have been implemented in India with the example of Odisha state. आगे हमको डिफाइन करिया पड़ियो सोशल एम्पावरमेंट कौन देन हाउ द पॉलिसीज ऑफ सोशल एम्पावरमेंट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विथ द एग्जांपल फ्रॉम ओडिशा स्टेट देखो ये मु हिंट भी लिखी तो हिंट रे तुमको कौन बुझा पड़ियो तुम बुझा पड़ियो व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जदि आम डिमांड ऑफ द क्वेश्चन बुझी पारे ताले आमे ताको स्ट्रक्चर करके आंसर लिख परिबा इट इज नॉट merely a welfare initiative but as an institutional mechanism that transitioned marginalized group from passive recipient to an active agent of growth ये जो सोशल एम्पावरमेंट कथा कहा होची कि स्कीम्स कथा कहा होची एटा सेमिति गोटे इनिशिएटिव नुहे कि तांकर केवल वेलफेयर होबो से माने पासिव रिसिपिएंट हेबे से माने बसिक रहबे जा तांको सरकार दबो से माने नेकी जिवे नो इट इज एन इंस्टीट्यूशनल मेकानिज्म तांको मेकानिज्म रे अणा गला सो दैट फ्रॉम पासिव रिसिपिएंट दे बिकम एक्टिव एजेंट्स ऑफ ग्रोथ से माने एक्टिवली कंट्रीब्यूट करिवे टू द ग्रोथ फाइन सो आमे फर्स्ट आंसर करिवा व्हाट इज सोशल एम्पावरमेंट एंड देन वी विल गो टू द सेकंड पार्ट द सोशल एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ऑटोनॉमी सेल्फ रिलायंस एंड कैपेसिटी एमंग हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड को माने वुमेन children, SC/ST, persons with disability and minorities. Old age भी आसीबे ठीक to eliminate systematic discrimination and ensure equal access of resource and decision making. This is important. Equal access, okay, equal access of resource and decision making. This is important. In the Indian context, they represent the operational or constitutional mandate under Article 15, 17, 38 and 46. Article 15, 17, 38 और 46 रे तांको जहाँ भी constitutional mandate मिली that represent the social empowerment or that is the constitutional mandate to make them socially empowered. Coming to the body the policy implementation with Odisha example कौन policy है particularly with respect to Odisha gender empowerment and political agency first देखो gender empowerment and political agency हम प्रथम देखिवा सेकंड देखिवा SC/ST ग्रुप मान पई थर्ड हमें देखिवा right based for PWD and lastly we will talk about the minorities that is transgender and all ठीक आहरी भी बहुत सारा जिनस अच्छी बट आमे ताको इनकॉर्पोरेट करि परिबानी बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड लिमिटेशन ऑफ वर्ड लिमिट फर्स्ट ला जेंडर एम्पावरमेंट एंड पॉलिटिकल एजेंसी पॉलिसी फोकस कौन थिला मूविंग बियॉन्ड इकोनॉमिक टोकनिज्म टू स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर केवल तांको इकोनॉमिक हिसाब रे किछि टोकन देगी किछि वेलफेयर कर देले किछि पैसा दे देले होबनी वी नीड टू स्ट्रक्चरली पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग रे तांको हमरो माने दे शुड कंट्रीब्यूट टू द पॉलिटिक्स एंड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग जेमिति हमर एसएचजी ग्रुप हे गला से माने कंट्रीब्यूट करचंदी से माने केवल पासिव रिसिपिएंट हे कि से माने केवल वेलफेयर स्कीम रे भाग नउनांती दे आर पॉलिटिकली एक्टिव एंड दे आर आल्सो टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस जदि हमें ओडिसा रो कथा कहबा वी नो दैट देयर इज 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस पीआरआई रे 50% रिजर्वेशन अच्छी एडिशनल मिशन शक्ति जोटा आम सुभद्रा शक्ति कहते मिशन शक्ति इनिशिएटिव हैज कन्वर्टेड 6 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप इनटू फॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइज
से माने केवल एसएचजी ହେଇକି माने आज इंस्टीट्यूशन हिसाब रे काम करना दे आर आल्सो प्रोड्यूसिंग सम प्रोडक्ट माइक्रो एंटरप्राइज हिसाब से प्रोडक्ट भी तैयारी करछंदी एंड दे आर आल्सो मैनेजिंग द दे आर आल्सो मैनेजिंग द somewhere they are managing the ponds ठीक अछि गार जो ponds अछि ताकू से मैनेज करछंदी they are managing the theaters किछि कि जगह से थिएटर को भी मैनेज करछंदी and they are actively engaged in political and financial decision making. Second is about tribal and scheduled caste asset creation. Policy focus kon thila securing land tenure because they are mostly landless laborer तो तांको पे लैंड टेन्योर को फिक्स करिवा लाइवलीहुड सिक्योरिटी लाइक द एफआरए 2006 एक्ट लाइवलीहुड सिक्योरिटी पे आस्थिला ब्रिजिंग द एजुकेशनल डिवाइड फॉर हिस्टोरिकल एक्सक्लूडेड कम्युनिटीज तांको केमिति एजुकेशन रे हमें आगो को नेकी बढ़िबा ता पई हमर पॉलिसी फोकस से थिला ओडिसा रे कोन करा गला थ्रो मो जंगल जमी योजना जोटा कि ओडिसा लीड्स द नेशन इन रिकॉग्नाइजिंग कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट अंडर एफआरए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एजुकेशन तांको पई अछि अन्योसा स्कीम जोटा कि ओडिसा प्रोवाइड करछि फ्री रेसिडेंशियल इंग्लिश मीडियम एजुकेशन टू रूरल एससी एसटी स्टूडेंट्स देखो आउरी बहुत सारा अछि मॉडल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स ओडिसा आदर्श विद्यालय बट स्पेसिफिकली जे हमें एससी एसटी कथा कहबा एंड पर्टिकुलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओडिसा देन वी मस्ट राइट अन्योसा एंड मो जंगल जमी योजना बिकॉज एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल हो कि नवोदय दे आर कमिंग अंडर द सेंट्रल नवोदय रे माने रिजर्वेशन अछि एकलव्य तो तांको पई तयारी छि एसटी पॉपुलेशन पई सो दीज आर फंडेड बाय द सेंटर आमे जेहेतु ओडिसा विषय कथा होउतनी सो ओडिसा रो स्कीम को आमे फोकस करी लिखिबा थर्ड इज राइट बेस्ड इंक्लूजन ऑफ पीडब्ल्यूडी शिफ्टिंग फ्रॉम चैरिटी बेस्ड वेलफेयर मॉडल टू राइट बेस्ड डिग्निटी फ्रेमवर्क आगे कौन होता कि माने से माने गवर्नमेंट जहाँ दबो से माने खाली आज ए पासिव रिसिपेंट से नेबे दे डोंट हैव एनी डिग्निटी से माने किछि कहियार अधिकार नथिला से माने सेति की एंटाइटलमेंट राइट्स वाला किछि सेमि नथिला बट नाउ दैट इज शिफ्टेड टू राइट बेस्ड डिग्निटी फ्रेमवर्क अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 करंट गवर्नमेंट जोटा अछि एनडीए गवर्नमेंट इन 2016 they have bring the historical act of rpwd 2016 जो एक्ट आसला दैट चेंज्ड एवरीथिंग तांको राइट बेस्ड डिग्निटी फ्रेमवर्क रे इंक्लूड करा गला ना कि चैरिटी बेसिस से तांको जेमती सरकार जहा दे देले से नै कि तादरे खुशी हेबे इफ यू टॉक अबाउट ओडिसा the Odisha utilizes a dedicated department SSCPD to execute the Madhu pension योजना मधुबाबू पेंशन योजना रे जो पीडब्ल्यूडी पर्सन्स रहिले प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तांको दी मिलला सेतरे as they are getting some financial help through this मधुबाबू पेंशन योजना targeted livelihood training and distribution of assistive device तांको ट्रेनिंग भी दियाला how they can maintain their livelihood and distribution of assistive device किछि ट्राइसाइकल्स वगैरह किछि तांको जो माने डिजेबल अछन तांको केमति हमें एबल करि परिबा सेति पई जहा जहा असिस्टिव डिवाइस अछि दैट इज आल्सो बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एंश्योरिंग देयर इकोनॉमिक मेनस्ट्रीमिंग तांको इकोनॉमी रो मेनस्ट्रीम को आनिया पई जहा जहा दरकार से जिंस करा गला द लास्ट वन इज ट्रांसजेंडर मेनस्ट्रीमिंग एंड इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन ट्रांसजेंडर आई गेस फ्रॉम 2020 और 21 रो सबुतर क्वेश्चन आछे ओके सबुतर सोशल एम्पावरमेंट आसे केबे केबे से पचार दियंती पर्टिकुलरली एसटी विषय पचार देबे कि तांकर हेल्थ पे कोन कोन करा आइछि केबे केबे से पचार देबे ट्रांसजेंडर मानक पई कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन चेंज करा हला किबा सुप्रीम कोर्ट रो कोन जजमेंट आसला ओडिसा गवर्नमेंट रो कोन इनिशिएटिव अछि दैट वी नो सो दैट वी शुड नो ठीक अछि पॉलिसी फोकस कोन हला लीगल रिकॉग्निशन ट्रांसजेंडर मानक लीगल रिकॉग्निशन मिलला स्किल डेवलपमेंट करा गला एंड फॉर्मल सोशल इंटीग्रेशन टू एलिमिनेट स्टिग्मा ट्रांसजेंडर मानकर सबुठू बड़ प्रॉब्लम है स्टिग्मा तांकर बहुत जगह एमती देखा जाए कि इवन देयर फैमिली आल्सो नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देम एंड यू कैन इमेजिन द पेन एंड ट्रॉमा दे आर गोइंग थ्रू सो टू eliminate the stigma integrate them into the social
और मेन स्ट्रीम सोशल इंटीग्रेशन करने गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस स्टेप्स. इफ यू टॉक अबाउट ओडिशा, particularly ओडिशा रे कौन अच्छी अंडर द पायोनियरिंग सिक्योरिटी स्कीम transgender persons are explicitly integrated to public service roles such as managing urban parking lots, जो parking places अच्छी ताकू से माने मैनेज करछंती, property tax collection, operating decentralized मुक्त जीवन कम्युनिटी सेंटर्स सो दैट से माने लाइवलीहुड पाइबे आ तांगर सोशल डिग्निटी जोटा मिलवा कथा दैट आल्सो दे कैन गेट थ्रू दिस स्कीम. कमिंग टू द कंक्लूजन, ओडिशा or Odisha's social empowerment architecture stands out because it successfully shifted from standard dole-based welfare to right-driven asset and capacity creation. Okay, केवल dole-based नुहे कि थरे वेलफेयर करदेले तांकर हबनी, इट शुड बी right-driven, तांको तांको राइट जहाँ अच्छी ताको मिलिया दरकार. And we should also talk about their capacity creation or capacity building approach by अमृत सेन. कैपेसिटी बिल्डिंग तांगर कैपेसिटी हमको बिल्ड करिया पड़िबो. By institutionalizing grassroots execution, the state has effectively translated national constitutional goal into scalable, localized socio-economic mobility. Okay, these are the conclusion that you can write. But जेतबेले तुम conclusion लिखिबो जहाँ तुम बॉडीज लिखिछ ताकू मिसई की एटी कंक्लूड करिवो. सब बेले किछि नुवा जिंस जेतरे ऐड करिवोनी, सब बेले तुम जहाँ बॉडी रे लिखिछ ताकू मिसई की कंक्लूड करिकि तुमरो आंसर को सारिबो. And the last question of today is discuss how the Bhakti movement transformed religious practice and social relation in medieval Odisha. Bhakti movement रो केमिति ट्रांसफॉर्म कला रिलीजियस प्रैक्टिस का सोशल रिलेशन को सेटा हमें करिवार अछि. एटी हम लिखले एंड इवैल्यूएटर 6 इवैल्यूएटर कोन खोजुची बैलेंस्ड हिस्टोरिकल एनालिसिस शोइंग हाउ भक्ति मूवमेंट ट्रांसफॉर्म Odisha from a rigid ritualistic society into an egalitarian vernacularized culture catalyzed primarily by Panchasaka and Sri Chaitanya. Okay, so let's complete this. Starting with the introduction, the Bhakti movement in medieval Odisha acted as a powerful vehicle for socio-religious democratization. आगुरी सोशल आम केम थिला रिजिड थिला रिचुअलिस्टिक थिला ताकू आमे चेंज करा गला थ्रू दिस भक्ति movement. Emerging as a critic scriptural orthodoxy and caste hegemony, it shifted the epicenter of faith from esoteric ritualism to absolute devotion. This spiritual renaissance permanently constructed Odisha's social fabric and synthesized its unique religious identity around the cult of Lord Jagannath. देखिबा हमें एबे ट्रांसफॉर्मेशन of practice and relations. First la radical metamorphosis of religious practice. प्रथम vernaculization of scripture. Vernaculization माने जोटा हमर संस्कृत रे लिटरेचर वगैरह थिला ताकू ओडिया रे ट्रांसलेट करा गला. हम जानचंदी पंचसखा बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, यशवंत दास and अनंत दास. They translated the Sanskrit into Odia. बलराम दास करो जगन्मोहन रामायण, बलराम दास करो जगमोहन रामायण, जगन्नाथ दास करो ओडिया भागवत मेड स्क्रिप्चर्स एक्सेसिबल टू मासेस. मासेस माने ओडिया शिखिथिले. संस्कृत वाज कंसीडर्ड एज ए स्कॉलर्स लैंग्वेज, तो समस्त को संस्कृत आसनथिला. तो मास माने केमिति पढिबे जदी ओडिया लिटरेचर अवेलेबल थिबो दे कैन रीड इट. तो बलराम दास करो जगमोहन रामायण हो, जगन्नाथ दास करो ओडिया भागवत हो, सेटा सब मासेस मानक पई स्क्रिप्चर्स को एक्सेसिबल कराइला. ब्रेकिंग द ब्राह्मणिकल मोनोपोली ओवर नॉलेज. आगुरु थिला ब्राह्मण माने ही संस्कृत शिखुथिले, तो से माने ही जहाँ ट्रांसलेट करी कहिबे भागवत हो रामायण हो लोकमान सेहितरु ही शिखि परथिले. सेकंड इज डेमोक्राटाइजेशन ऑफ वर्शिप. रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्लेक्स टेंपल सेरेमनी वर रिप्लेस्ड बाय कांग्रेगेशनल चैंटिंग और नाम संकीर्तन. के करथिले जेतबेले श्री चैतन्य ओडिशा को आसिले से नाम संकीर्तन नहीं आसिले. ग्रुप रे लोक मैंने गैदर होइकी भगवान को नाम संकीर्तन करथिले, नाचुथिले. ढोल जोटा ढोल तो कही हेनी, जोटा खोल बोली कहती, बाजा बोली कहती, जोटा सेटा बजैकी कंसाल जहाँ भी इंस्ट्रुमेंट अच्छी ताको बजैकी प्रेम गीत गायकी लोक मैंने नाचुथिले.
सेटा हला नाम संकीर्तन मेकिंग स्पिरिचुअल लिबरेशन एक्सेसिबल विदाउट प्राइसली इंटरमिडिएशन। आगु लगुला कि केवल ब्राह्मण मैंने ही पूजा कले कि प्राइस मैंने पूजा कले ही पूजा संपन्न हम एवं लोक लगे कि आम भी नाम संकीर्तन करी समान जहाँ पुण्य अच्छे आम कमी पार। एंड थर्ड थिंग इज इवोल्यूशन ऑफ जगन्नाथ कल्ट द मूवमेंट positioned Lord Jagannath not a remote deity but as deeply humanized Ganadevata or deity of people observing tribal sovereign origin and heterodox traditions. Actually it is too late in night so टिके pronunciation episode हो जाउची। Okay, so Lord Jagannath as a remote deity थिले से आगे तो during this भक्ति movement तांको आमे ह्यूमनाइज्ड गणदेवता कले माने लोक माने जेमती रुहंती लोक माने सहित तांकर कल्चर को बिल्कुल माने आमे कोन कहे जगन्नाथଙ୍କର जेमती तांकर रथ यात्रा करिवा रथ यात्रा बेले माँ लक्ष्मी रागी की जीवा तांको जगन्नाथ रसगोल्ला देकी मनैबा जोटा नॉर्मली फैमिली मानकर हुए जगन्नाथଙ୍କର जहाँ परंपरा अच्छी सेटा भी ओडिया मानकर फैमिली सहित ऑलमोस्ट समान आमे तांको भगवान मानुचंती आमे तांको पूजा करचंती तो तांकर जहाँ जहाँ से माने सी करुले आमे भी फॉलो करती तो से गणदेवता समस्त इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग से गणदेवता से समस्त से भगवान जोटा आम ओडिशार भगवान आम कहते ओडिशार जहाँ को लेकिन आइडेंटिटी डेटी ऑफ पीपल दैट इज लॉर्ड जगन्नाथ परंपरा को लेकिन आमर परंपरा तैयारी सो से आम कौन था ट्राइबल जो शबर ओरिजिन आम कहते जगन्नाथ स्टार्ट होती से नहीं गणदेवता पर्यंत हवा पर्यंत भक्ति मूवमेंट काल में प्रभाव पड़ता। सेकेंड थिंग इज अबाउट री एनर्जिंग और री इंजीनियरिंग ऑफ सोशल रिलेशंस। सोशल रिलेशन को री इंजीनियरिंग केमती कराला जोटा पड़ता सोशल रिलेशन इन मेडिवल ओडिशा। ठीक अच्छे फर्स्ट ऑन असल्ट ऑन कास्ट हायरार्की भक्ति सेंट फियर्सली चैलेंज द वर्ण सिस्टम से माने जो आम चार्टा वर्ण अच्छी से चार्टा वर्ण को सी फायरली ओके फायरली से चैलेंज करते इट इज नॉट राइट वर्ण करदे ये वर्ण लोक यही कम करेंगे ये वर्ण लोक यही कम करेंगे से माने चैलेंज करते कि इट इज नॉट राइट। द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ चंडाल भक्ति asserted that a devout lower caste individual was spiritually superior to an unrighteous brahmin। आम जो देखा लक्ष्मी पुराण भी आम पढ़ा लक्ष्मी पुराण भी लिखाई ना कि कास्ट जेहेतु बलराम आ जगन्नाथ कास्ट को मानुले लक्ष्मी शिखेले कि कास्ट आउ माने कास्ट को लेकिन किसी लोक को डिस्क्रिमिनेट करिया कथा नुहे जी भी पूजा कर जी भी भक्तिर सहित डाक से हेल्प करेंगे लक्ष्मी पुराण में कथा वर्णना करा जायछि। सेकेंड इज इगैलिटेरियन सैक्रेड स्पेस लाइक द आनंद बजार ऑफ पुरी टेम्पल सेठी कौन अच्छी आनंद बजार समस्ते मिसिकी राजा प्रजा सब मिसिकी गोटे जगह खाईपर। The radical equalizer where Mahaprasada was consumed collectively by all caste without pollution taboos कह जाए ना किसी कास्ट हायर कास्ट किसी लोअर कास्ट तो लोअर कास्ट को लोक मैंने हायर कास्ट पीपल भावती कि मैंने पॉल्यूटेड आम प्योर तो से सब टाबूज को खत्म करिकी महाप्रसाद समस्ते मिसिकी जो आनंद बजार अच्छी से सब कास्ट लोक मिसिकी खाईपर ए यूनिक सोशल फिनोमिनन इन मेडिवल इंडिया एंड इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस। The movement provided structural space to the subaltern latter offshoots like Mohima Dharma, rooted in Bhakti lineage, completely rejected Brahmanical structure to empower tribal and untouchable population। जो ने marginalist थे तांको भी भक्ति मूवमेंट रे से माननको भी इंक्लूड करा गला ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को सेठी कम कर दिया गला सो दैट मार्जिनलाइज्ड वॉइस को भी आमे इंक्लूड कर परिबा। सो दीटा पार्ट थिला आमे गोटे पार्ट रे देखले कि how radical metamorphosis of religious practice was undergone and secondly we talked about re-engineering of social relations। ठीक अच्छे कंक्लूजन आम कौन रखा फ्रॉम एन एनालिटिकल पर्सपेक्टिव द भक्ति मूवमेंट इन मेडिवल ओडिशा was as much a social revolution as it was a religious reformation। रिलीजियस रिफॉर्मेशन जी मात्रा थिला ताटू अधिक मात्रा सोशल रिवोल्यूशन थिला by replacing hierarchical Sanskritic culture while egalitarian vernacular devotion it laid the foundation bedrock of modern Odia sub-national identity
It successfully turned the religious state deity into a symbol of universal casteless brotherhood. ठीक अच्छे तो दीटा क्वेश्चन जो दीटा आंसर थिला ताको आमे एमती लिखिकी कंक्लूड कर परिया. So the last piece of information that OPSC Achievers Academy is also providing OPSC OCS 2025 मेंस mock test. We are providing 36 टेस्ट बोथ से तुम फुल लेंथ टेस्ट भी रहिबो आ सेक्शनल टेस्ट भी रहिबो फुल लेंथ आ सेक्शनल टेस्ट भी रहिबो along with all materials like GS1 to नेकी GS4 again essay ए सबूर मटेरियल आम तुमको दबू जस्ट तुमको पढ़वार अच्छी यू जस्ट नीड टू रिवाइज एंड राइट मॉक दैट्स ऑल. तुम जहाँ मॉक लिखो 4 to 5 days विल इवालुएट ताहे तो तुमको टिप्स वगैरह मिल हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग बिकज प्रिलिम्स क्लियर कले तुमको किसी जॉब मिलनी यू नीड टू क्लियर द मेन्स एंड इंटरव्यू एक्चुअल जदि मेन्स से भल मार्क रखिथो इंटरव्यू रे स्कोर किसी कमिगले भी देन ऑल्सो यू विल गेट ए गुड रैंक. तो से ट्राए टू राइट मेन्स मॉक लिखा स्टार्ट करूँ. टाइम बहुत कम दिन रहा रिजल्ट आसार 70 to 80 days भितर माने आउ तुम टाइम जानी परिवनी वंस द रिजल्ट विल कम तुम जानी परिवनी आ जो मानकर प्रिलिम्स स्कोर कम अच्छी ओके देन यू शुड ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग फॉर मेन्स कारण मेन्स तुम थे कंप्लीट कर तुम नेक्स्ट प्रिलिम्स से तुम मिनिमम 7 to 10 क्वेश्चंस आराम रे तुम सॉल्व कर पारिबो. फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग है नेक्स्ट ईयर जहाँ इनफॉरमेशन अच्छी ओएस पोस्ट इज कमिंग अराउंड 170 प्लस तो सेटा को जदि पाइबार अच्छी जदि ओएस होबार अच्छी जदि भी तुम प्रिलिम्स भल है देन ऑल्सो यू स्टार्ट राइटिंग कारण एथर जो पिला माने मेंस लिखिबे जो माने रैंक नेबे से माने आर्थर भी लिखिबे बिकॉज एथर ग्रुप बी पोस्ट अधिक अच्छी ग्रुप ए कम पोस्ट अच्छी तो से माने एगेन लिखिबे तो तुम भाव से माने एबे भी पढ़िबे सेबे पढ़िबे तुम सहित कम्पीट करिवे आ तुम सेतबेले थरे प्रैक्टिस करी लिखिबो सो चांसेस आर वेरी लेस. टाइम अच्छी जे तुम प्रिलिम्स डाउट अच्छे स्टिल आई विल रिकमेंड टू जॉइन द कोर्स. ठीक आमठू मटेरियल नियंतु ताकू पढ़ंतु प्रैक्टिस करंतु आउ लिखिया स्टार्ट करंतु. मटेरियल कलेक्शन ने बिल्कुल टाइम खराब करार जरूरत नहीं. वी विल प्रोवाइड यू एवरी मटेरियल जहाँ मेन से दरकार एवरी मटेरियल दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय अस एंड अलॉन्ग विथ दिस ओडिया आउ इंग्लिश रो भी दुटा मग रखीचु ओडिया प्लस इंग्लिश दुटा टेस्ट इंग्लिश रो दुटा टेस्ट ओडिया भी रहिबो दैट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेटा भी आम तुमको करूँ. सो 36 प्लस दिस ठीक अच्छे. सो इफ यू वांट टू जॉइन आवर कोर्स यू कैन कॉल और यू कैन DM on 7989778247. टेलीग्राम बोधे किसी दिन पे बंद रहिबो आज द नीट एग्जाम इज देयर ऑन 21st. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू शट डाउन टेलीग्राम बोधे 22 तारीख रे खोलिबो. सो इफ यू आर वाचिंग द वीडियो बिफोर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप. आप व्हाट्सएप रे भी हमको कॉन्टैक्ट कर परिबे ए नंबर 7989778247 7989778247 or you can directly call and talk with us before purchasing the course. यदि किसी डाउट अच्छी and everything you can ask us. ठीक अच्छे. So thanks for watching the lecture. Have a great day.